it's Shalini. Welcome back to my channel Little Pixie Dust. So in today's video I'm going to show you all the products that I have used up, and I'm so excited to film this empty products video, guys. And see, I have used up so much products, lots of products, and जो भी products मैं ख़त्म करते जा रही हूँ उसे इस tray में collect करते जा रही हूँ. I have collected so many products, as you can see. Now I'm going to dig in and share my thoughts about this product with you guys, so that आप लोग को पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट मैं repurchase करूँगी, कौन से प्रोडक्ट मैं परचेस नहीं करूँगी, and आप लोग को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में. So yes, and if you are new to my channel, and thank you so much for tuning in, and please subscribe to my channel, it will mean a lot to me. So now let's start with the video then. So the first product which I have used completely is this Neutrogena oil free eye makeup remover, and this is a very good makeup remover. And the best part is इसके use करने के बाद आपके face में बिल्कुल भी oil का traces नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी oily नहीं लगेगा. ये completely oil free है, and this is a very good remover for waterproof makeup, waterproof mascara, and I love this makeup remover. And ये actually में मेरा third bottle है, so yeah, I will surely repurchase this product again and again. The second product I have is this micellar water from Maybelline, and this is also a nice product, but I'm not sure whether I will repurchase this product or not, because I already have another micellar water from Garnier. So yeah, I wanted to see the difference between these two, and yeah, after using that I will decide whether I will repurchase this or not. The next product is Lacto Calamine, and yes, I have 2 bottles of it, and I have completely used both of this, and I love this product. मैं ये डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ. मैं फाउंडेशन बहुत कम यूज़ करती हूँ, लाइक जब भी कोई इवेंट है या फिर कोई पार्टी है तभी मैं फाउंडेशन का यूज़ करती हूँ, और एल्स डेली बेसिस में हमेशा मैं लैक्टो कैलामाइन का यूज़ करती हूँ. एंड मैंने ऑलरेडी इसका बिगर बॉटल भी परचेज कर लिया है. सो या, आई लव दिस प्रोडक्ट. आई विल कीप repurchasing this product in the future also. So the next product is this shampoo and conditioner from Garnier, and this is their Garnier Fructis strengthening conditioner and shampoo. And I will not repurchase this shampoo because ऐसे कोई मैंने ज़्यादा difference अपने hairs पे नहीं देखा है, and at present I have better shampoo than this, so yeah, I will not repurchase this shampoo again. And the next product is this shampoo from Tresemme. This is their Keratin Smooth for Straighter Shiny Hair Shampoo, and I love this shampoo. अगर आप लोगों ने मेरा हेयर केयर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने शैम्पू के बारे में बताया है. ये शैम्पू मेरे हेयर्स को काफ़ी स्ट्रेट, स्मूथ एंड शाइनी रखता है. द पॉजिटिव पॉइंट इज बाल काफ़ी स्ट्रेट रहते हैं इस शैम्पू को यूज़ करने से. सो या, आई लव दिस शैम्पू फॉर दैट, एंड मैंने इस बॉटल को कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है, एंड आई हैव ऑलरेडी परचेज द बिगर बॉटल ऑफ इट, and in the future also I will keep repurchasing this shampoo. So the next product is this Patanjali aloe vera gel, and मैंने इसको completely finish कर दिया है. and as you all know कि पतंजलि का एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है अपनी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए. ये मल्टीपर्पज़ है, इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं. मैं अपने इसको हेयर्स पे यूज़ करती हूँ फॉर स्प्लिट एंड्स, एंड जब भी मेरा फेस थोड़ा डल लगता है तभी भी मैं इसकी यूज़ करती हूँ. अगर पिंपल्स होते हैं तो भी मैं इसकी यूज़ करती हूँ. So yeah, I love this product, and I have already purchased the bigger bottle of this, and ये भी almost ख़त्म होने वाला है. So yeah, I have to again repurchase this aloe vera gel. So yeah, I love this product, and I will surely repurchase this product in the future. The next product is this compact powder from Lakme 9 to 5. This is their Lakme 9 to 5 Flawless Matte Complexion Compact Powder, and जो शेड है वो है Almond Matte, and दोनों ही मैंने completely यूज़ कर लिए हैं. बिल्कुल भी इसमें प्रोडक्ट नहीं बचा है. मैंने इसको completely यूज़ कर चुकी हूँ, and already I have repurchased this compact powder. So yeah, this is my go-to compact powder. I have lots of compact powder, but मैं हमेशा इसी का ही यूज़ करती हूँ डेली रूटीन पे. So yes, I love this, and yes, I will keep repurchasing this compact powder in the future also. The next product is this nail paint remover. This is from Colorbar. This is their ultimate nail enamel remover, and the best part is this is acetone free, जो कि nails के लिए बहुत अच्छा है, nails को affect नहीं करेगा. and सबसे best part ये है कि इसके लिए अलग से cotton की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसके अंदर ही sponge रहता है, and उसमें remover filled up रहता है. जैसे क्या होता है कि बस आपको अपने nails को इसके अंदर dip करना होता है, like within 2-3 seconds में जो nail paint है वो बिल्कुल भी हट जाता है. So yeah, this is a very good remover, and yes, I will repurchase this remover again. So the next product is this body butter from Himalaya. This is their Himalaya Rich Cocoa Butter Body Cream, and I have used this
प्रोडक्ट कम्प्लीटली लाइक इट्स एम्प्टी नाउ, इसमें बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं बचा है. एंड आई लव दिस क्रीम. ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी का है एंड जो मेरी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है. सो इसके यूज़ करने के बाद जो स्किन है उसको बहुत ही अच्छे से नरिशमेंट मिलता है, बहुत देर तक, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ये मॉइस्चराइज रहता है. एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसका फ्रेगनेंस है, जो इसका स्मेल है वो बहुत ही यमी है, लाइक प्रॉपर फुल ऑन चॉकलेटी स्मेल है. सो या आई लव दिस बॉडी बटर एंड आई हैव ऑलरेडी परचेज अनदर वन. अगर आप लोग की स्किन ड्राई है, फ्लेकी है, सो आप इस क्रीम को एक बार ट्राई दे सकते हैं एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस बॉडी बटर. So the next product is this Lotus toner. This is their professional range clarifying and soothing toner, and I will not repurchase this toner because already I have lots and lots of toner and currently I am using प्लम का ग्रीन टी वाला टोनर. इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस मेरे स्किन पे नहीं शो हुआ है. सो आई विल नॉट repurchase this again. The next product is this shower gel from Palmolive. This is their aroma moments feel glamorous pampering shower gel and it's a nice shower gel. इसका जो fragrance है काफ़ी fruity है, काफ़ी अच्छा है, refresh feel देता है. बट आई विल नॉट repurchase दिस अगेन बिकॉज मैं और भी शावर जेल यूज़ करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि और कौन कौन से शावर जेल मार्केट में अवेलेबल है जो और भी अच्छे हैं. आई एम श्योर इससे भी बहुत अच्छे शावर जेल्स अवेलेबल है मार्केट में. सो या आई विल नॉट repurchase दिस अगेन. The next product is this perfume. This is Skin by Titan and I love this perfume. This is my third or fourth bottle and I have already purchased another bottle of it. One second. Yeah, this is the another bottle and ये भी मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. ये अभी यहाँ तक empty हो चुका है. So yeah, I love this perfume and I will keep repurchasing this perfume in the future also. Next product is this lipstick. This is from Maybelline. This is their lip gradation range and both the shades are same. The shade name is Pink 2 and I have completely used both of this lipstick completely. This is my go to lipstick. मैं हमेशा इस लिपस्टिक का यूज़ करती हूँ अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा लिपस्टिक लगाना है कौन से आउटफिट के साथ, तो मैं हमेशा इस लिपस्टिक को यूज़ करती हूँ. I love this lipstick. This is like pink color, like little dark purplish pink color and currently I am wearing this lipstick and मैंने already इसका fresh piece purchase कर लिया है and in the future also I will keep repurchasing this lipstick. Next product is this lipstick and this is from the same brand जो पहले था. This is Maybelline Lip Gradation and इसका जो shade है वो है Red 2. इसका बहुत ही प्यारा red color है and इसको भी मैंने completely use कर चुकी हूँ मैं. And I will not repurchase this lipstick because already I have better red but that pink one, I love that pink one. जब भी वो pink 2 lipstick ख़त्म होगा मैं उसको हमेशा purchase करूँगी but I will not repurchase this because I have better red in my collection. So yes. So the last product is this lip balm. This is from Nivea. This is their original care lip balm and ये भी मैंने completely use कर चुकी हूँ. इसमें बिल्कुल भी product left नहीं है. सो येस एंड आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लिप बाम बट जो लिप बाम है ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ लाइक नाइट पे सोने से पहले मैं इसी का यूज़ करती हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी परचेज 2 ऑफ देम एंड एक मेरे बैग में है एंड एक मेरे नाइट टेबल पे है. सो या आई लव दिस लिप बाम एंड आई विल कीप repurchasing लिप बाम इन द फ्यूचर ऑल्सो. So that's about it. I hope you guys like this video and if you like this video then please like, share and subscribe to my channel and make sure to press the bell icon so that you will get notification whenever I post any new videos. Follow me on my Instagram handle. I will mention all the links in the description box below, so do check out. So guys, I will meet you all on my next video. Till then, bye bye.